Good morning, friends. Important change effective from 1st of October 2022. As we all know that there was compulsory generation of e-invoice for registered person having aggregate turnover exceeding 500 crore rupees was made applicable from 1st of October 2020. This limit of 500 crore reduced to 100 crore from 1st January 2021. Then this 100 crore reduced to 50 crore from 1st April 2021. And then this 50 crore limit is reduced to 20 crore from 1st April 2022. Now, this limit of 20 crore is now further reduced to 10 crore rupees effective from 1st of October 2022 for compulsorily generation of e-invoice. So any registered person whose aggregate turnover exceeding 10 crore rupees in any of the preceding financial year starting from 2017-18, then he has to compulsorily generate e-invoice, IRN, invoice reference number. So what is the meaning coming out? If the threshold of aggregate turnover exceeding 10 crore in any preceding financial year starting from 2017-18, then this is going to be applicable. So what you have to look at? You have to look at your aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18. Let's take an example that we are in the mid of financial year 2022-23. And this provision is now made applicable from 1st October 2022. So what happened? We have to check our threshold limit of aggregate turnover in any preceding financial year starting from 2017-18. So starting from 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, in any of the preceding financial year, if this threshold of aggregate turnover exceeding 10 crore, then compulsorily as a registered person you have to generate e-invoice. Let's take an example that you are in financial year 2022 and 23 and you want to determine when it is going to be applicable. I've explained to all of you. Now let's assume your aggregate turnover is not exceeding 10 crore in any of the preceding financial year starting from 17-18, but it is exceeding 10 crore only in current financial year, which is 2022 and 23, but less than 20 crore. Whether this generation of e-invoice is compulsorily from 1st October 2022? Answer is big no. It is applicable only when your aggregate turnover limit exceeding 10 crore in any of the preceding financial year. So let's say in 21-22 it was 12 crore rupees, assumed 12 crore rupees. You are not generating your e-invoice because threshold prescribed was 20 crore from 1st April 2022. Now what happened? Is it applicable for you from 1st October 2022? Answer is yes, because exceeding 10 crore in any preceding financial year. In simple language, जब आपको aggregate turnover देखनी है तो आपको किसी भी preceding financial year स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18 से देखनी है, यानी 17-18, 18-19, 19-20, 20-21,
21-22 आप इसमें देखिए, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो अब आपके लिए कंपल्सरली जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। अब ई इनवॉइसिंग किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्विकली मेरे कई वीडियोज हैं आपके पास, बट फिर भी क्विकली रन कर देता हूँ। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी के लिए कंपल्सरी नहीं है। नॉट एप्लीकेबल फॉर एसईजेड यूनिट बट नॉट डेवलपर। एसईजेड यूनिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट डेवलपर के लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, नॉट एप्लीकेबल। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, नॉट एप्लीकेबल। मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा एडमिशन, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आपको कंपल्सरली ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? इट इज ओनली फॉर B2B, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, B2B टैक्सेबल सप्लाईज, यानी आपकी सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए और B2B होनी चाहिए। And any debit note and credit note pertaining to your B2B taxable supplies and export, इसके लिए आपका compulsorily generation of e-invoice। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है? स्टार्ट विथ, इफ यू आर डूइंग B2C transaction, not applicable. If it is exempted supplies and you are generating bill of supply, not applicable. If you are receiving advance for supply of services and raising a receipt voucher, not applicable. Refund, when you are refunding the money of advance money received, refund voucher, not applicable. In case of RCM, payment voucher is being created, self-invoice is being generated when you are procuring from unregistered supplier and subject to RCM. This e-invoicing provision not applicable for payment voucher and self-invoice. Even it is not applicable for ISD invoice, input service distributor invoice. Having said that, अब आपको करना क्या है? मान लीजिए आपके लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो अपने अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, B2B टैक्सेबल सप्लाईज, आपको वो इनवॉइस एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं, और वो जो स्कीमा है INV01, उसमें स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स है। वो सारे पर्टिकुलर्स आपको अपनी इनवॉइस पे फर्निश करने पड़ेंगे। यू नीड टू फर्निश ऑल स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन ई स्कीमा INV01 फॉर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस, and that invoice generated from your own accounting and billing software, and this should be converted into JSON file. And once converted into JSON file, you need to transmit such invoice with the specified particulars on dedicated invoice registration portal. Invoice registration portal. So government has launched different invoice registration portal. Once you are creating your invoice with specified particulars converted into JSON file, now going to be transmitted to IRP. This IRP will do deduplication check and verification. Once everything is fine, then IRP going to generate unique invoice reference number with QR code and digitally sign, and give it back in JSON form to the supplier who has uploaded, transmitted such invoice for getting IRN, invoice registration number, through this IRP portal. And IRP also going to push the data to two dedicated portal, GST portal for your
data to be auto-populated for preparation of GSTR1, which is outward supply statement. So whatever आपने IRN generate किया, इसका सारा डेटा मंथली बेसिस पे GST कॉमन पोर्टल पे चला जाएगा, जहां से आपका GSTR1 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, बट आपको चेक और वेरीफाई करना है। IRP डेटा आपके ई-वे बिल पोर्टल पे भी भेज देगा फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। अगर आपने सारे पर्टिकुलर्स लाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी जिसमें आप ट्रक नंबर और सारी डिटेल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डालते हैं, अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी के पर्टिकुलर्स सारे फिलअप कर दिए हैं और तब आपने अपना IRN जनरेट किया है थ्रू IRP, देन IRP सारा डेटा आपका ट्रांसमिट कर देगा ई-वे बिल पोर्टल पे। फ्रॉम ई-वे बिल पोर्टल यू कैन जनरेट योर ई-वे बिल wherever required. Way forward, these are going to be integrated, but now this is the compulsorily generation of e-invoice. When threshold exceeding 10 crore in any preceding financial year, starting from 2017-18, get set, go and ready. Check out your billing and accounting software and check out that your invoice must have specified particulars converted into JSON file transmitted to IRP for deduplication check verification, and IRP going to give you unique IRN number digitally signed with QR code. Thanks for watching. Thank you very much.